Assalamu alaikum, guys. This is me, Ali Bakir Khan from Youth Alumni Association, and this is another session. And today we've got Misha Asad with us. Misha, thank you so much for joining. It's my pleasure. All right, that's good to know. Let me just go ahead and tell you a little bit about Misha. Misha graduated from UET Lahore back in 2018. And currently she's working as assistant manager proposal and contracts with a company known as Fibercraft Industries. So this is a little bit of introduction from my side. Now, Misha, I would want you to go ahead and explain more about your journey and give some insight regarding the session that is lack of career counseling in Pakistan. But that's something that we're going to come, I'll ask you in the next question. First, tell us about yourself, about your journey, what sort of person you are, and how did you reach what you've reached today? Because one thing that I was watching is that you were an engineer, right? You graduated from UET Lahore and you landed up as an assistant manager for proposal and contracts, which is contradictory to what you've been doing. But just go ahead and give us some insight about Uh, yourself. Yeah. yeah, okay. I have started my educational career as an engineer in 2014 as a polymer engineer. The field is itself not well known in our community, Okay. but I got admission, alhamdulillah. And during my career as an engineer, I've been always thinking that going into something more like engineering or production side, because engineering is a manufacturing oriented field. But after graduating, I have landed myself into sales and marketing, Okay. and I just love that field. Interacting with people and making proposals or growing your business and being the highlight of something, interacting with companies like Embryo, Forge Fertilizer, Fatma Fertilizer, etc. It gives me an immense pleasure to be around people. So then I have decided that this is what I'm going to be doing with my career, and I have stuck to it since then. I've been working at Fibercraft, and this is my first job at there, and still I am working with them from 3.5 years almost. I have joined as an application and design engineer, and I've recently promoted as assistant manager, proposal, and contracts there. Like during my engineering, I did only one internship at BSF. That was a splendid experience for me working with such BSF in great Lahore, people. Business Support Fund, is that what Yes, you're trying to say? BSF. Because I've been working there. I don't know if you know about people, Razik Moyuddin. Then I used to work for Bahria University, Islamabad. There was an MOU that they signed with Bahria University for Center for Entrepreneurship and Leadership, but that was back in 2013. I'm not sure if that's the same BSF that we are talking about. Now, BSF is a chemical, Oh, chemical it's a manufacturing. different industry. I Yes, thought it was yes, Business Support Fund. different Can you industry. explain And BSF? it's I mean, related what to, does that exactly mean? I mean, in terms of uh, where you've been working. no, I don't exactly remember their That's that, subject. I actually in a lot of completely forgot scenarios, about it. this is something that does happen. So it's totally fine. Yeah, go ahead. Yeah, I completely forgot. It's back in 2016, 17, I guess. So I completely forgot about it. It's a multinational company. They Okay, have their sort of sales unit in Pakistan, I BHI, I see. guess. I see. So I worked there as well in sort of sales unit. From there, I got a taste of sales. ठीक है, And that's good to know. Alhamdulillah, I have That's good been. to know. अच्छा, मुझे मीशा, I remember मेरी आपसे बात हो रही थी and आपने मुझे कुछ questions भी दिए regarding lack of career counseling in Pakistan. Yeah, And I think you agree to the idea that वाकई career counseling is lacking in Pakistan. So, बिल्कुल जी, go ahead. बिल्कुल ऐसा ही है एक्चुअली अगर मैं अपनी भी बात करूं तो यूजुअली लाइक देयर इज नोबडी अराउंड अस तो कि हम लोग को प्रॉपर एक गाइडेंस दे सके कि व्हाट इज द राइट पाथ टू चूज जी, इट्स जस्ट लाइक कि आप लोग when you are growing up it's always been like doctor and engineer yeah, like there is nothing else
Either you Nothing want to be a beyond that, we doctor cannot or think you want about to be that, a हाँ कि भाई यही दो एक fields engineer. हैं जिनके Yes. ऊपर हमने जाना है, हाँ हाँ, और इसके अलावा भी अगर मतलब like we don't consider other fields up to the mark. yeah अगर कोई कहता है कि like I am going into fine arts or I'm going into like commerce, anything like that, on that ground, like I want to be a designer. yeah These all of these career choices are not well popular among our like forefathers and ancestors, whatever you say, हमारे parents हैं, society है, इतना इन चीजों को accept नहीं करती. It's hmm. always like it's always like being an engineer, being a doctor. So on that line, I don't want to be a doctor. So I guess okay, go for being an engineer. Actually, I just wanted, and in general, maybe मुझे ऐसा ही लगता है कि it's all about कि I want to get admission in UET. अच्छा, Like UET is a you know, brand, no doubt about that. University of Engineering and Technology. हर बंदा जो yeah, UET का UET is graduate a होता है, brand. I mean, people actually look forward towards them कि अच्छा यार UET से graduation आपने की है, which is a good thing. But आपने जो, can you elaborate a little bit about कि आपकी field क्या थी? Because it's a new word to me and I would love to know more about it and I would love to tell the youth as well कि this is a field जिसके थ्रू हम अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि अगर उसमें अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो क्यों नहीं है. What did you exactly do and where do you think opportunities are lacking, and do you think that due to lack of career counseling that was a decision that you had to make at that time? Yes, exactly. Because I don't know at the time of passing FSC how many types of engineering are there. Yeah. We only known about like chemical, mechanical, petroleum, and some to civil, architectural. But in UET, it's almost 20 to 23 engineering fields. Hmm. So when I got to the university, first I got admission in mining engineering. Like it's also an engineering. It जी. was very shocking for me. Then I got in polymer engineering, and I started it. And Alhamdulillah, it's a very good field. It's all about plastics and composites and very high-end application like UAVs manufacturing and all that kind of thing. Like everywhere around us is plastic, and it's a very growing field. It's a growing So I guess, field. So, जी जी, go ahead. आप complete कर लें. so I guess the one of the most important thing in career counseling is how many kind of fields are out there, because Hmm. nobody knows. Hmm. There are so many fields in medical sector, subfields. It's not about being a doctor only. Yeah. And similarly, it goes with engineering. There are Hmm. so many fields and subfields and diplomas and like a big scope of things. Same goes with commerce and design and everything. Like we even lack the basic information when it comes to the divisions of different career fields. So I guess Yeah. this is something that needs utmost attention कि actually market में available क्या क्या है. हमें Hmm. यही नहीं पता होता कि market में कितनी चीजें available हैं. जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि market में available क्या क्या है, हम लोग सोच नहीं सकते. हम लोग सिर्फ यहाँ पे ही रहेंगे कि either I'm going to be an MBA or I'm going to Hmm. be an engineer or I'm going to be a doctor. Hmm. So I guess the first thing one of the things we need to do about career counseling is actually list down all the possible things you can do after clearing your FSC. हाँ, अच्छा, because I've been to different institutes. I went to educators. There was a workshop that we guys conducted. I had a team of Youth Alumni Association. They're still working for me. Uh, so there was a batch of like 30 students there, out of which everyone was a genius. Trust me. Like somebody wanted to pursue an army, a career in army, basically. I think अगर हम लोग O levels और metric के लेवल पे ही करियर काउंसलिंग एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दें, दिस इज माय थिंकिंग ऑब्वियसली. आई वुड वांट, बिकॉज एज अ स्टूडेंट आप यूईटी से पढ़ी हैं, सो डेफिनेटली आपके इतने मार्क्स थे, आपको उधर एडमिशन मिला, सो यू गॉट अ सर्टेन माइंडसेट जिसके ऊपर हमारी यूथ वुड लाइक टू नो अबाउट दिस एस्पेक्ट. So don't you think if we in Pakistan introduce this subject, career counseling, उसके अंदर हम proper fields, we can describe
एटलीस्ट एक चैप्टर होना चाहिए, जिस तरह आपकी इंजीनियरिंग की एक फील्ड है उस पे एक होना चाहिए, बिल्कुल एमबीबीएस पे एक होना चाहिए, आप हम्म, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या करते हैं। हम लोग बिल्कुल सुनते हैं बहुत सारे लोगों से, अ, मेरे वालिद साहब ही यूज्ड टू बी इन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो वो ब्यूरोक्रेसी में आपको पता है वो कहेंगे जी बच्चा सीएसएस कर ले, हम्म, ठीक है, तो हम सीएसएस की तरफ निकल पड़ते हैं। हाँ वालदा जी अगर डॉक्टर हो आपकी या किसी की भी, हमारी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। माय मदर शी वाज अ टीचर, बट शी नेवर वांटेड मी टू बी अ टीचर, व्हाई, बिकॉज पता नहीं, औरतों को यही होता है कि जी माओ को कि बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर ही बने। अब खैर, कमिंग टू द पॉइंट इज कि हम सुनते हैं और हम बस निकल पड़ते हैं कि जी बाबा ने कहा है, my father asked me to go for CSS and I just went. We guys don't know what to do. And एक्चुअली द थिंग इज ये जो जी जी, आप just let me बात just कर complete रहे हैं for ना कि 30 seconds up. श्योर श्योर I was coming towards the conclusion and then I'll let you speak, based on what I'm talking about. होता क्या है eventually के we guys don't know what we are enrolling ourselves into. Ab being from a Pakistani class, एक upper middle class, even elite class, if they're paying a fee a certain semester की, आप लम्स जाते हैं, आप यूईटी में जाते हैं, आपकी एक सेमेस्टर की फी होती है जो कि आजकल काफी ज्यादा है, मतलब इट्स नॉट दैट इजी टू अफोर्ड इट अनटिल एंड अनलेस आपने उसको स्कॉलरशिप लिया हुआ है। मिडिल क्लास की बात अगर हम करें तो अब वो फी पे कर देते हैं, बच्चों पे और प्रेशर पड़ जाता है कि यार अब तो एडमिशन हो गया है, अब तो मेरी फी भी पे हो गई है। नाउ यू डोंट हैव एन ऑप्शन टू चेंज फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर। फिर आप कहते हैं यार अब तो मैंने बस शुरू कर दिया है तो बस अब तो मैंने 4 साल गुजारने। सो डोंट यू थिंक दिस काइंड ऑफ माइंडसेट इज गोइंग टू लीड अस टुवर्ड्स नोवेयर। हम लोग एक कहते हैं ना, एक अनरियलिस्टिक गोल्स को परसू करते चले जाएंगे और उसका आउटपुट कोई नहीं होगा। नाउ गो हेड एंड स्पीक अबाउट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एस्पेक्ट। हाँ एक्चुअली ये जो आपने अभी बात की ना कि हमें स्कूल लेवल से करियर काउंसलिंग स्टार्ट करनी चाहिए, ये सिर्फ ये चीज बहुत अच्छी अप्रोच है और ये सक्सेसफुल तब हो सकती है अगर हम एक्चुअली फील्ड से लोगों को बुलाएं जैसे आप कर रहे हैं। लाइक इट्स अ ग्रेट अप्रोच कि आप प्रोफेशनल्स से करवा रहे हैं ये सारे सेशंस, बिकॉज वो इन सब स्टेजेस से गुजर के एक लेवल तक पहुंचे हैं, उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइजेस किए होंगे, उन्होंने भी एक हम्म रॉन्ग करियर चूज करके उसको सक्सेसफुल बनाया होगा। हम्म द थिंग इज कि अगर स्कूल्स में कहीं भी ये इनिशिएटिव होता है तो आई गेस उनकी पहली अप्रोच ये होगी कि कोई टीचर ही जिसने टीचिंग की फील्ड नहीं पर वो ही इस चीज पे भी जो है वो एक्सप्लेन करे या गाइड करे। हम्म इसके लिए हमें अपनी अप्रोच अप्रोच एक ठीक करनी पड़ेगी कि ओनली प्रोफेशनल्स आप लोग गेस्ट स्पीकर्स बुला सकते हैं। आप लोग किसी भी सक्सेसफुल जिसका प्रोफेशनल करियर हो आप उनको बुला सकते हैं। आप मंथ में एक भी सेशन अगर रख लें तो दैट विल बी ग्रेट फॉर द यूथ के उन लोगों को एक डायरेक्शन मिलेगी, उन लोगों को एक पाथ मिल जाएगा उनको। ये और कुछ नहीं, अगर सपोज करें मैं इंजीनियर हूँ लाइक मैं उनको एक ये तो बता सकती हूँ ना कि जस्ट सर्च फॉर हाउ मेनी फील्ड्स आर आउट देयर। हम्म आई एग्री। आई हाँ और कुछ नहीं तो ये सब चीजें जो हैं ये हमारे स्ट्रीमलाइन यहाँ होना देखें देखें, स्टार्ट हो हमारे जो जाएंगी। स्कूल्स हैं उसमें हमारा एक पीटी टीचर होता है, हमारा एक म्यूजिक टीचर बिल्कुल होता है, हमारी एक आर्ट एंड ड्राइंग टीचर होती है, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, मैथ्स ज्योग्राफी में। हम्म, आई मीन इट, टू मी इट्स रियली शॉकिंग टू सी कि हमारे यहाँ करियर काउंसलिंग का कोई एक्सपर्ट नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि हमारे यहाँ इस चीज पे फोकस ही नहीं किया गया था ना। आर फोकस आर वेरी डिफरेंट। हम कहते हैं लाइक स्कूल में है तो चलें पहले मैट्रिक क्लियर कर लें, हाँ, बिकॉज वो मैट्रिक के टाइम पे हमें ये होता है कि अब हमने कंप्यूटर रखना है या बायो रखनी है या हमने आर्ट्स पढ़नी है या साइंस पढ़नी है। लाइक वी आर नेवर फोकस्ड ऑन कि अल्टीमेटली कोई बनना क्या चाहता है। आई एग्री। आपने मुझे, यू गेव मी अ थॉट पर्सपेक्टिव व्हाइल वी वर टॉकिंग प्रीवियसली। आपने मुझे कहा था कि जी देयर इज समथिंग दैट वाज इन योर माइंड दैट आई कैन सी हियर, दैट व्हाई पीपल आरंट हैप्पी विद व्हाट देयर करियर चॉइसेस आर, like what choices they make. Basically people are not happy with those choices. So do you want to explain something in या regards to that? या श्योर व्हाई नॉट। ये चीज मैंने इंजीनियरिंग में जाके देखी थी बिकॉज देयर आर सो मेनी। आप अगर
मतलब यूएडी की किसी पेज को फॉलो करते हैं तो लाइक एवरी ईयर यू विल सी मल्टीपल पोस्ट के इतने सारे लोगों ने सीएसएस क्लियर कर लिया. हम्म। व्हाई इन द फर्स्ट प्लेस यू पीपल आर जॉइंड इंजीनियरिंग? अगर अल्टीमेटली आप लोगों ने सीएसएस ही करना था या आप लोगों ने किसी गवर्नमेंट जॉब कोई भी मतलब वो अपॉर्चुनिटीज अवेल करनी थी तो व्हाई इंजीनियरिंग हाँ मतलब या एक व्हाई एक एक बंदा डॉक्टर है, लेट मी गिव यू अ वेरी स्ट्रेट एग्जांपल. अब आपको पता है कि डॉक्टर्स बनने के लिए वी हैव अ लॉट ऑफ मेरिट इन पाकिस्तान. फर्स्ट आप एफएससी देते हो, ए लेवल्स किया तो यस आप मार्क्स कन्वर्ट करवाते हैं, फिर हाँ आप फिर आप एम कैट, एमसीए आई देते गेस हो. एग्जैक्टली, आप एम कैट यस देते हैं. एमकैट ठीक है, वो जो एमकैट एक एमकैट. एंट्री टेस्ट जिसको कहा जाता है. हम्म. उसके बाद पॉइंट्स की बेसिस पे जो है ना, लोग दे आर क्यूरियस के यार आई सो वांट टू बिकम अ डॉक्टर. अब होता है क्या जी, हम्म. एक इंटेलिजेंट लॉट आती है, वो हम्म. एक लॉट में से 10 बंदे मेडिकल करके 10 के 10 कहते हैं अब हम सीएसएस करते हैं. अब वो जो 10 सीट्स हम्म. हैं, उनकी बेसिस पे किसी का करियर तबाह हो जाता है. वाई? बिकॉज कोई सेकंड अटेम्प्ट भी दे रहा होता है, कोई थर्ड अटेम्प्ट भी दे रहा होता है. वो हम्म. बेचारा तो फिर बिल्कुल. मतलब ही कैन जस्ट गो एनीवेयर एल्स. बट अगेन उसका वो जो गोल है वो तो बेचारे का टूट जाता है, राइट? सो और जो हाँ दूसरा बिल्कुल जिसको तो. डॉक्टर जो बन जाता है, ही गोज फॉर सीएसएस इवेंचुअली. वो ब्यूरोक्रेसी में चला जाता है. तो आप ब्यूरोक्रेसी में जाना है तो आप डॉक्टर ना बने. देयर शुडंट बी एनी हायरिंग ऑफ डॉक्टर्स इन ब्यूरोक्रेसी. हाँ, अगर तो उनकी रेलेवेंट फील्ड है कि इफ यू नीड अ डॉक्टर हम्म. इन इनकम टैक्स, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, या कोई भी आपको एक डिपार्टमेंट के लिए डॉक्टर चाहिए, दैट्स अनदर सिचुएशन कि जी आप सीएसएस करें और आप फिर उसके बाद एज अ डॉक्टर आप हमें आके सर्व करें. बट टोटली फील्ड चेंज कर देना, डोंट यू थिंक दिस इज समथिंग अनफेयर? यस दिस इज एक्चुअली अनफेयर. मैं बिल्कुल भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करती हूँ एट एनी स्टेज. और दूसरा मेरा एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि सपोज इंजीनियरिंग कर लिया आपने या आपने आई कॉम बी कॉम कर लिया है या आपने एमबीए कर लिया है और आपको अब लग रहा है कि जो मैंने किया है वो ठीक नहीं है. हम्म. लेकिन आपको थोड़ी देर के लिए ये सोचना चाहिए कि यार मैं इसमें ही अगर कोशिश करूँ एक्सेल करने की, एडजस्ट होने, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट. या. हमारा एडजस्ट होने वाला माइंडसेट भी नहीं डेवलप होता. हम्म. वी ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग एल्स. ये चीज भी हमारी एक यूथ को समझाने वाली, बताने वाली, गाइड करने वाली बात है कि इफ यू हैव डन समथिंग एट योर ओन चॉइस और आउट ऑफ सम प्रेशर, you have invested your time, your skill, योर टाइम, इतना योर कुछ आपने एफर्ट, योर इन्वेस्ट यार कर लिया है, आपके your पेरेंट्स का टाइम effort. इन्वेस्ट हो रहा है, बिल्कुल. इट्स. बिल्कुल उनके उनकी फाइनेंसेस इन्वेस्ट हो रही हैं. लाइक नाउ यू हैव ग्रेजुएटेड एंड यू आर लाइक आई डोंट वांट टू परस्यू अ करियर इन इंजीनियरिंग. आपने कुछ अचीव कर लिया है तो यू शुड एट लीस्ट गिव इट अ ट्राई. हम्म. आई और टोटली एग्री. मतलब आई एग्री विद दैट पार्ट. आप कर लेते हो. आप अगर आप उन अगर आप चलने की कोशिश करो, आप कोई पाथ देखने की कोशिश करो तो आप कर लेते हो. बट इट्स लाइक समथिंग स्टक इन योर माइंड कि इंजीनियरिंग कर ली अब तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, इसमें कोई जॉब नहीं मिलेगी, मैं कुछ हम्म. कर नहीं सकूंगा या एनीथिंग. अब जैसे आप आगे मेडिकल की बात कर रहे थे, लाइक मेडिकल की फील्ड मेडिकल के 5 years के बाद और ज्यादा कम्पिटेटिव हो जाती है. हम्म. तो इफ यू आर लाइक नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, तो ऐसे तो कुछ नहीं होता. लाइक अब आपने जो कर लिया है आपको उसमें ही कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए. और सिर्फ ये नहीं, मुझे लगता है कि करियर काउंसलिंग के बाद हमें जो हमारी डिग्रीज होती हैं उसके दौरान जॉब की काउंसलिंग भी मिलनी चाहिए. मिशा, हमें ये भी you're काउंसलिंग मिलनी absolutely right. चाहिए कि You're absolutely right कि जो जॉब फेयर्स हैं वो कंडक्ट तो हम करते हैं, फेयर इनफ. बिल्कुल. बट जो जिस अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहा है, इट्स लाइक अ फिश मार्केट. You're going here and there, you don't know what your own expertise is, what you're capable of. और आप बस एक दौड़ में लग गए हैं और आप जो है ना वो बस लगे जा रहे हैं. ठीक है, देन देयर इज अ स्टेटमेंट कि जी वो मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक होती है. हाँ पॉइंट इज कि बिल्कुल जब बिल्कुल. आपको पता ही नहीं है आपने क्या करना है, तो फिर आपको तस्बीह आती है, वो भी इट्स अ गुड स्टेटमेंट आई थिंक. एटलीस्ट उसके अंदर भी कोई या लॉजिक है इट कि यार वो मस्जिद जा रहा है इज. बिकॉज ही इज अ पर्सन हु लाइक्स टू प्रे. वो ही इज अल्लाह अ ताला से, तो चलो या. मस्जिद बनी हुई है ना उसके लिए. हमारे लिए तो वो भी नहीं, हम्म. हमें तो ये भी नहीं पता कि हमने क्या पढ़ने और कहाँ जाना है. तो आई थिंक उस हम्म. स्टेटमेंट से भी मुझे वो भी इससे बेहतर लगी है जितना हमारा हालात जो हमारे चल रहे हैं. हमारे I जितने जी, हालात आई वाकई थिंक उससे बिल्कुल बेहतर तो ये है कि है चले आप बात. एटलीस्ट जाके फिर आप तबलीग शुरू करते हैं. दिस इज व्हाट आई थिंक इज बेटर देन व्हाट वी गाइस आर डूइंग.
We are trying to go towards things जिनका हमें idea नहीं है. Anyways, coming to the conclusion of it, I want you to give me 3 points that you'd like to uh, give it to the government, because obviously this is a video that we would like to take it to the next level. What advice would you want to give to people out there listening to you, uh, that these 3 points can make Pakistan a better society, and this is how we can improve lack of career counseling in Pakistan? And let's conclude on that. Can you please give those 3 points? Yeah, sure. First of all, there really should be a directional path. हमें कोई proper channels बनाने चाहिए from the beginning, जो Hmm. कि guide करें हम लोग initial level से बच्चों को, Hmm. कि वो सोचें कि वो लोग क्या करना चाहते हैं. Hmm. हम लोग कोई क्रिएटिव लोगों से भी सेशंस करवाएं, हम लोग डिफरेंट तरह के लोगों से सेशंस करवाएं, और हम लोग देखें कि हमारे जो यूथ है वो एक्चुअली करना क्या चाहती है, और फिर जो टीचर्स हैं या जो भी आपके अराउंड जितने भी लोग हैं, वो अगर बच्चा किसी चीज का शौक रखता है तो उसको उसमें पुश करें. I वो agree. लोग उन्हें एक डायरेक्शन दें ठीक है, कि ओके पहला पॉइंट फाइन आपका यू हो गया वांट जी, टू बी. डायरेक्शनल पाथ. आपके जो बिल्कुल. टीचर्स हैं, आपके जो कोच है, आपका जो मेंटोर है, आपका जो करियर काउंसलिंग कोच है, वो आपको दे. व्हाट शुड बी द सेकंड इनिशिएटिव दैट वी मस्ट टेक? आई गेस सेकंड इनिशिएटिव शुड बी अ प्लेटफॉर्म हम्म. जहाँ पे हम लोग ओपनली इंटरेक्ट कर सकें विद द प्रोफेशनल्स. अ अब जैसे प्लेटफॉर्म फॉर ओपन इंटरेक्शन. फॉर एग्जांपल, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मेरा विजन है सेंटर फॉर करियर काउंसलिंग एंड लीडरशिप एस्टैब्लिश करने का हर स्कूल और यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, क्योंकि हर लेवल पे आपको करियर काउंसलिंग चाहिए होती है. कैसे? मैट्रिक में आप डिसाइड करते हैं जी बायो रखनी है या कंप्यूटर रखनी है. अब मामा कहती है नहीं जी मैंने तो डॉक्टर ही बनाना है, तो मैं तो बायो रखवाऊंगी. ठीक है, वालिद साहब कहते हैं यार आजकल आईटी का स्कोप है, 3-3 4-4 5-5 लाख तो सैलरीज हैं बच्चों की, नहीं यार ये तो कंप्यूटर में जाएगा. Why do we think like that? So I think yeah, a platform for open interaction with your teachers, जहां पे आप डिसीजन लेने से पहले एक दिन पूरा लगाएं, आप वर्कशॉप्स अटेंड करें, आप वीडियोस देखें, आप सेमिनार्स देखें कि दिस इज व्हाट अ डॉक्टर डज, ये डॉक्टर का करियर होता है और इवेंचुअली ये डॉक्टर को मिलता है. आई टोटली एग्री. व्हाट वुड बी द लास्ट पॉइंटर? लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि हमें सिर्फ ना डिग्रीज पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें स्किल्स पे फोकस करना चाहिए. ओके. हमें अपनी यूथ को एक इम्प्रेशन देना चाहिए कि इट्स नॉट अबाउट बीइंग लाइक होल्डिंग डिग्री ओनली. यू शुड लर्न. आपको डिफरेंट स्किल्स सीखने चाहिए. आपको जैसे मतलब बेसिक है, जैसे हमें बहुत सारे बच्चों को हमारे आफ्टर यूनिवर्सिटी भी उनको कमांड नहीं होती है ऑफिस पे, वर्ड पे, पावर पॉइंट पे, एक्सेल पे. इट्स अ स्किल. या. हमें हमें बच्चों को थोड़ा स्किल ओरिएंटेड बनाना चाहिए, रेदर देन कि वो बुक्स पढ़ें, रट्टे लगाएं और मैट्रिक और एसएससी में मार्क्स लें और फिर आगे जाके कोई भी एक फील्ड ज्वाइन कर लें. हमें एक स्किल ओरिएंटेड अप्रोच डेवलप करनी चाहिए, जिसके लिए हमें बहुत इनिशियल लेवल से यही वर्कशॉप, सेमिनार, ये सब चीजें ऑर्गेनाइज करानी चाहिए. बच्चों को बताना चाहिए कि ये स्किल सेट है जो आपको हेल्प करेगा थ्रू आउट योर जर्नी. That makes a lot of sense. Misha, thank you so much for your time today. It was a pleasure talking to you. You've gone through the whole concept. We guys had a very good discussion and interaction, and I would definitely love to circle back to you if you guys need an advice regarding engineering of your background. If someone comes up, कोई school मुझे reach out करता है कि जी, I'll definitely reach out, and I hope that you will find some time out again to make sure that you become a participant for the good cause. Anything else that you have for me? Do you have any questions? I just think your initiative is great and I really want to see this happening because मैं अपने आसपास हर जगह यही देखती हूँ कि अगर बेटर पाथ, बेटर करियर काउंसलिंग या बेटर डायरेक्शन मिली होती किसी को, तो वो आज बहुत बेटर प्लेस पे होते, वो कर रहे होते जो वो करना चाहते थे. तो दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव और इसको यूट्यूब पे लेके आना इज फर्दर स्टेप. इट्स एक्सेसिबल टू एवरीबॉडी नाउ. Definitely it is. Okay, for all of those who are new to listening to our video, we've got a page on Facebook, Youth Alumni Association. You can go ahead and follow us on that.
एंड देखें फॉलो करने से कुछ नहीं होगा, यू नीड टू कम अप विद क्वेश्चंस, यू नीड टू एक्चुअली स्प्रेड द वर्ड। फॉलो करके हम फेसबुक पे बहुत सारी बातें करते हैं, बट इवेंचुअली होता यही है कि गवर्नमेंट वही कर रही है जो वो करती रही है, और हम बैठ के सिर्फ सुन रहे बिल्कुल होते हैं। बट दिस इज अ बिल्कुल क्वेश्चन दैट वी हैव टू आस्क फ्रॉम आवरसेल्व्स, दैट जो हमारे पेरेंट्स हमारे पे लगा रहे हैं, उसको तो हमने कहीं ना कहीं फ्रूटफुल करना है ना। ये कोई गवर्नमेंट का पैसा तो नहीं है, ये तो हार्ड अर्नड मनी है जो कि हमारे पे मानी लग रही है। अगर आपके पेरेंट्स नहीं, आपके रिलेटिव्स या कोई भी सपोर्ट कर रहा है, या यू नो कहीं से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पहले तो आप यू शुड बी थैंकफुल कि आपको सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट मिली है। आपको बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनको हु डू नॉट हैव दीज अपॉर्चुनिटीज। तो अगर आपको वो टाइम मिल रहा है, मैं ये नहीं कहता कि आप जबरदस्ती कुछ करें, हमारा पॉइंट है आप इंटरेस्टिंग चीज करें जिसमें आपको इंटरेस्ट है। और फिर गवर्नमेंट के लिए हमारा ये मैसेज है कि आप वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें सोसाइटी में, जिसके थ्रू एक कनेक्शन बिल्ड हो जाए ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन विद दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। So thank you, Misha. It was nice talking to you again. I'll end this here, and you can also follow us and look into our sessions, and your feedback is always much appreciated. थैंक यू ठीक है सो जी, मच। अल्लाह हाफिज, thank you. अल्लाह हाफ़िज़।